Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Welcome to lecture number 11 of differential equation in online session. Layout of the lecture. Initially I will explain the contents which we have studied in the last lecture. That means review of the last lecture. In the last lecture we studied the variation of parameter for second order differential equation. But in today's lecture we will study the same method for higher order differential equations. Initially I will explain the methodology of the method, summary of the method जो कि last class में भी explain कर दी गई थी. Then we will deal with some of the examples जो second order से ज़्यादा होंगी, higher order की होंगी, 3, 4, 5 up to any order. Then there will be some practice questions for you. In the last lecture, what we studied the motivation of variation of parameter. In that method, we have studied that there are this method is basically used to find the solution of a non-homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. That equation must be linear in nature. इससे पहले हमने जो दो मेथड पढ़े थे, those were named as undetermined coefficient by superposition method, undetermined coefficients by annihilator approach. ये दो मेथड पढ़े थे, मगर इन दोनों मेथड की रिस्ट्रिक्शन थी कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शंस नॉन होमोजेनियस पार्ट स्पेसिफिक काइंड का हो, पोलिनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कांस्टेंट्स हो, तो ये मेथड्स अप्लाई होते हैं, अदरवाइज ये नहीं अप्लाई होते. मगर जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो थोड़ा जनरल है एज कम्पेयर टू देम. ये मेथड अगर इस तरह की नॉन होमोजेनिटी थोड़ी कम्प्लेक्स भी हो जाए तो भी अप्लाई होता है. Method for first order differential equation. In that lecture, initially we defined the method for first order differential equation. Later on, we moved toward the second order differential equation. फिर कुछ steps हमने define किए थे, जिन steps को follow करते हुए हम solution find करते हैं. और साथ ही हमने एक बात और भी डिस्कस की थी, वो ये कि जब कभी भी इंटीग्रेट करेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. मगर हम इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे. इग्नोर करने की बेसिक वजह इस लेक्चर में डिफाइन की गई थी, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ कंबाइन होकर एक नया कांस्टेंट जनरेट करता है. सो इस वजह से हम फॉर सिंप्लिसिटी कहते हैं कि चलो कांस्टेंट नहीं लगाते, कोई बात नहीं. सो then we solved some examples related to the method. ये बेसिकली सारा लेआउट था जो कि लास्ट लेक्चर से रिलेटेड था. मगर जैसे कि मैंने पहले बताया है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, दैट वाज द सेम मेथड फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सेम मेथड फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी हम इसी मेथड की एक्सटेंशन करते हैं फॉर हायर ऑर्डर्स. For higher orders, this is for higher orders. फर्दर ऑन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर था क्या और हम लोगों ने क्या पढ़ा था. फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ये पढ़ा था कि इनिशियली व्हाट वी हैव टू डू इज टू कंस्ट्रक्ट एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे कि जो हमारे पास कोफिशिएंट है a2 ऑफ एक्स, हायर ऑर्डर जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे, देन वी विल हैव एफ ऑफ एक्स. लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, अप्रोक्सीमेटली हर क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स दोनों सेम थे. उसकी वजह क्या थी कि a2 ऑफ एक्स की जगह पे हमेशा 1 ही यूज हो रहा था. अगर 1 ना भी हो, कोई नंबर भी हो या कोई
फंक्शन ऑफ x भी हो तो भी हमने ऐसा ही प्रोसीड करना है, कोई डिफरेंट काम नहीं होगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की कंडीशन में हमने एक बात ये पढ़ी थी कि ये मेथड सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब आप yc कैलकुलेट कर लेते हैं, अदरवाइज ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज yc को देखते हुए हमने अपनी सपोजिशन लेनी है yp की और फिर प्रोसीड करना है। So initial work is we have to calculate this yc, और yc कैलकुलेट करने के लिए what we need is homogeneous part of the differential equation. Homogeneous part of differential equation means put g of x equals to 0. So this is the homogeneous part of differential equation. Second order differential equation, so we found two solutions. Repeated हैं, नहीं हैं, complex हैं, या किसी भी form के हैं, but just we will find two solutions for the auxiliary equation. These are the solution of the main homogeneous differential equation. That means solution means whenever you put these solution into the main equation, what you will get, the equation will be satisfied. Once this phenomena is done, then what you have to do is to find yp. Yp will be u1 y1 plus u2 y2. Once your yp is selected, take the first derivative, the second derivative, and as many as possible and put them in a main differential equation. Main differential equation में हमने ये कहा था कि we need to avoid double derivative of u1 and u2. What we have to do is कि हमने stop करना है कि ये double derivatives appear हों. For that what we have selected is we put it equal to 0. यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसको हमने एंड पे यूज करना है, वो ये इक्वेशन है कि दिस पार्ट इज इक्वल टू 0 and this is the basic equation. Once we found this equation, the remaining part is yp prime is equals to u1 y1 prime plus u2 y2 prime. ये हमारे पास yp रह जाता है. Equation is second order, so what we need is a second solution. So second solution, both are the function of x by parts. Product rule apply होगा. Put them in a main second order differential equation. After putting them in a differential equation, we will get some simplification, and after that simplification a final equation will appear. एक वो equation जो last slide पे मैंने कही थी, और ये second equation, by using these two equation we can find u1 prime, और u1 prime with the help of Cramer's rule calculate किया गया है यहाँ पर, where this w1 is representing the part of the Cramer rule जो कि एक कॉलम को रिप्लेसमेंट के साथ आता है. Same is the case, u2 prime can also be calculated. यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि this w means the Wronskian. This Wronskian must not be equal to 0 because we are using two linearly independent set of solutions, so it must be satisfied that these the solutions will satisfy the Wronskian property. Once this is done, by integrating these equations, once you have found u1 of prime, u1 of prime एक दफ़ा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो u1 कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. You have to just do it to integrate with respect to x. Same is the case, you can calculate u2 by integrating u2 prime with respect to x. जब ये कैलकुलेट हो जाते हैं तो your yp is done, and your yp means u1 y1 plus u2 y2. Just put the values in this differential in this equation, and hence you can write the general solution. जनरल सोल्यूशन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर का सम के इक्विवेलेंट होता है. सो जनरल सोल्यूशन इज कंप्लीट. ये वो मेथड था जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है. अब इसी मेथड को हमने यूज करना है, बट वी हैव टू अप्लाई इट फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, higher order differential equations, initially let me define you the method of variation of parameter.
for these type of equations. First step, जो कि already पहले defined हो चुका था, कि if this is the non-homogeneous differential equation of order n, variation of parameter is basically depending on complementary solution. जब तक complementary solution नहीं आएगा, आप आगे proceed नहीं कर सकते. So in first step is you have to find the complementary solution. For that, we need a homogeneous equation, and this is the basic homogeneous equation. By using this equation, you can find the complementary solution. Nth order differential equation, so you will find n solutions. Once the solution is clear, तो second step हम लोगों ने ये define किया था कि you have to verify that the Wronskian must not be equals to 0. This Wronskian, that must not be equals to 0 for all the solutions which you have find. That means कि जितने भी solution आएंगे सारे आपस में linearly independent होंगे. Once they are linearly independent, what we have to do is yn और जो आपके पास मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां से आप f of x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. f of x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद you can construct a column with the help of all these equations, these set of homogeneous equations. ये बेसिकली हमारे पास मेन डिफरेंशियल इक्वेशन थी. ये वो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है जब आपने a2 को डिवाइड किया था. दिस वाज द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वाज a n of x, here it is up to or n. So ये n of x को डिवाइड करेंगे, जो आगे कोएफिशिएंट्स बनते जाएंगे वो सारे p की फॉर्म में होंगे. इस तरफ जो चीज जनरेट होगी, जो फंक्शन जनरेट होगा, लेट वी कॉल इट एज f of x. इस f of x की हेल्प से आपने कॉलम जनरेट करना है. उस कॉलम की मदद से आपने क्रैमर रूल के w1, w2, w3 एंड सो ऑन अप टू wn आपने कैलकुलेट करने हैं. ये हम सारे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ताकि हम कैलकुलेट कर सकें u1 of prime which will be equals to w1 by w, u2 of prime that will be equals to w2 by w and so on. Here we have uk prime equals to wk by w. This was the basic set of differential equations जिसको हम यूज कर रहे हैं to find uk prime. Once you have calculated uk prime, you can easily calculate जब आप with the help of integration uk prime, you can calculate uk. Same is the case, you can calculate u1, u2, u3 up to un. जितने भी यूज होंगे सारे कैलकुलेट करने के बाद, this is the basic set of integration and you can write your solution because जो guess आपने किया था with the help of variation of parameter that was related to this thing. And once yp is clear, you can write it in the linear combination with yc to form a general solution. Here is a note: n minus 1 equation in step 5 are just the assumptions, and while the final equation is representing the differential equation, the main differential equation of the question. Depending upon how the integrals of the derivatives uk prime of the unknown functions are found, the answers of yp may be different for different attempts to find yp for the same question. So you don't need to be worried about it कि आंसर डिफरेंट आ रहा है. yp जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट अप्रोच, आपके yp पे इफेक्ट आ सकता है. सो योर yp कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट अप्रोचेस. When asked to solve an initial condition जब भी आती हैं तो you are quite familiar with this phenomena कि जब भी initial condition या boundary conditions आती हैं, it means you have to find all the unknowns C1, C2 up to C, and जितने भी unknowns आ रहे हैं उन सबको भी calculate करना होता है. After all this study, let us move toward the example. Solve the differential equation by the concept of variation of parameter. Differential equation is of order 3.
हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज वी हैव टू जनरेट वाई सी टू मूव टुवर्ड द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वाई सी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन जनरेट करते हैं। अगर जो भी एक्सिलरी इक्वेशन आएगी उसके यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है। सिंथेटिक डिवीजन बहुत से क्वेश्चन में पहले भी आ चुके हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ, यू हैव टू बी गुड इन इट। सो हाउ टू यूज इट, हाउ टू अप्लाई इट, ये सारी बातें परफेक्शन लानी होगी आपको हर सूरत। यहाँ पर खैर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, सो लेट मी टेक कॉमन एम। एम कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं वो लगाएं, नहीं तो सिंपल सॉल्व करें। यू विल फाइंड these थ्री रूट्स, जिनमें से एक रियल रूट है और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। और रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट को लिखने का मेथड क्या होता है कि रियल रूट इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ C1 while द कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आ जाएं तो आप उन्हें साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। Once your YC is complete, then what you have to do is you have to define the Wronskian, that is W। और जो Wronskian का बेसिक फार्मूला है अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो Wronskian का बेसिक फार्मूला ये कहता है कि y1 prime y1 double prime, because we are having three roots so double derivative तक जाएगा, y2 prime double prime y3 3 prime and 3 double prime। ये बेसिकली हमारे पास Wronskian आ गया। अब मूव करते हैं Wronskian के लिए। एज वी आर हैविंग थ्री सॉल्यूशंस y1 y2 and y3, मूविंग टुवर्ड द सॉल्यूशंस, Wronskian सिंपल लिखेंगे, इट इज 1 सो रिमेनिंग डेरिवेटिव्स विल बी 0। cos साइन में cos में फिर साइन, इस तरह cos और साइन पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ओपन करने के लिए इट इज ऑल अप टू योर चॉइस, आप 3x3 को डायरेक्ट ओपन करना चाहें डायरेक्ट ओपन करें, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते आप रो ऑपरेशन अप्लाई करें फिर ओपन करते हैं, जो आपकी अपनी चॉइस है वैसे आप करें, मगर जब तक ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी हम प्रोसीड नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इट मींस तीनों रूट्स जो हैं तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टू मूव टुवर्ड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कैसे जनरेट करते थे कि जो हमारे पास a2 ऑफ एक्स है a3 ऑफ एक्स होगा, यहाँ पर a3 को डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ और इस साइड पे जो भी टर्म जनरेट होगी दैट विल बी एफ ऑफ एक्स। Once f of x is generated, then we will define w1। w1 क्या था? First you have to replace f of x, this will be y2 y3 y2 prime y3 prime y2 double prime and same as the case 3 double prime। ये हमारे पास w1 जनरेट हो गया। Same as the case we can construct w2 and w3, थर्ड ऑर्डर की है सो 3x3 मैट्रिक्स है तो w3 तक जाएंगे, w3 तक जाने के बाद we have to find u1 prime। Here we have w3 0 0 and cosecant of x, where this cosecant of x means f of x। We compute the required functions in the differential form। यहाँ पर सिंपल आप वैल्यूज पुट करें, W2 जो कैलकुलेट कर चुके हैं, W की जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यू विल गेट दीज रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। हमारा टारगेट था W कैलकुलेट करना, दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ दोज, सो वी हैव टू इंटीग्रेट टू फाइंड द एग्जैक्ट फंक्शन जिसका हमें तलाश थी। सो इंटीग्रेट करते हैं, वी विल गेट W1 by W, putting the values natural log of cosecant x minus cot of x, and hence similarly you can calculate u2 and u3। यहाँ पर हो सकता है कि आपको इंटीग्रेट करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मगर इंटीग्रेशन थोड़ी सी कोशिश करें हो जाएगी। Once
you found u1, u2, u3, then your yp will be u1, y1, u2, y2, same is the case u3 and y3. u1, u2, u3 की वैल्यूज पुट करें, y1, y2, y3 ऑलरेडी आपके पास है, सारी वैल्यूज पुट करें, your yp will be complete. Here we represented yp, natural log of cosecant x minus cot x minus cos of x, natural log of sin x minus x sin x. जनरल सोल्यूशन हमेशा सम ऑफ yc प्लस yp के इक्विवेलेंट होता है, so this is yc and the remaining part is yp. ये जनरल सोल्यूशन होगा. Now let us move toward one more example. In this part we will have a trigonometric function tan of x. Step 1, we need yc. For that we generated a homogeneous part of the equation. होमोजेनियस पार्ट ऑफ इक्वेशन से हमने सबसे पहले अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरेट की. ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स बनाए. अगेन वी गॉट द सेम काइंड ऑफ रूट्स, 0 and plus minus iota. yc will be same as that in the last question. And yc will be c1 plus c2 cos of x plus c3 sin of x. Selecting y1, y2, y3 same. w Wronskian जो last example में I think that was equals to 1, not equals to 0, so the Wronskian is well satisfied. Then what we have to do is constructed f of x. f of x construct करने के बाद what we constructed is a column 0, 0, tan of x. अब इस कॉलम की मदद से हम क्या करेंगे, w1, w2, w3 कैलकुलेट करेंगे. Here opening the determinant, it is tan of x minus sin of x minus sin of x tan of x. कॉलम वाइज हमने ये रिप्लेसमेंट की है, 0, 0, tan x, 0, 0, tan x, and here for w3 in the third column. डिफरेंशियल फॉर्म में जो अननोन फंक्शन था वो कैलकुलेट किया, dividing w1 by w. Simply it is Cramer's rule. What we need is the original form of a function. u prime से u1 में convert करने के लिए you have to do is to integrate the whole function with respect to x. By integrating हमारे पास एक function closed form में आता जाएगा, cos of x, और similarly this thing. यहाँ पर इंटीग्रेशन थोड़ी सी complicated हुई है because we are having two functions of x, one is sin of x, other one is tan of x. और u डॉट v जिसे बाय पार्ट्स आप कहते हैं, बाय पार्ट्स अप्लाई किया है. इंटीग्रल ऑफ sin x by cos x dx is equals to just rearranging the terms and then solving the integral. समझ आ जाएगा, सिंपल से फॉर्म में लिखा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. u1, u2, u3 कंप्लीट करने के बाद yp कंस्ट्रक्ट करेंगे. yp construct करेंगे. Once yp is constructed, what we have to do is then write the general form of our solution, where this is the general form of the main solution. Example number 3, third order differential equation. यहाँ पर तीनों मैंने थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली है. बहुत ज़्यादा जब फोर्थ या फिफ्थ की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हो जाता है. सो थर्ड ऑर्डर से एटलीस्ट आपको मेथड अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है. सो आई थिंक दैट विल बी इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. First,
The homogeneous equation what we have to construct is yc with the help of this auxiliary equation. तीनों distinct roots आए हैं, तीनों real roots भी हैं, so e power x, e power 2x and e power minus x. ये y के हमारे पास तीन values आई हैं, y1, y2 and y3. Now we will need the Wronskian. Wronskian देखें, ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन है कि रॉन्स्कियन मैंने सॉल्व करने के लिए ex कॉमन ले लिया फर्स्ट कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से, थर्ड कॉलम में से चीजें कॉमन लेके बाय ले आया, देन द डिटर्मिनेंट इज इन अ सिंपल फॉर्म. आप ये करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें, इससे क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. आप सिंपल जिस तरीके से मर्जी इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें, यू विल गेट योर आंसर एग्जैक्टली द सेम. The answer, the target is that must not be equals to 0. अगर ये equals to 0 नहीं होता, then we'll move toward generating f of x. f of x जनरेट करने के लिए मैंने ये कहा था, ये जो कोफिशिएंट है इसको डिवाइड करना है. कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, so this g of x will remain the same. g of x or the value of f of x is same. Both are same, so you can now construct w1 and opening the determinant, you can construct W2, you can construct W3. Once these things are clear, you can find U1 prime, U2 prime, U3 prime, and hence U1, U2, U3. They are all explained in the form of steps ताकि आपको ये बात properly और अच्छे तरीके से समझ आ जाए. यहाँ पर दो दफा पहले भी मैं बता चुका हूँ, तीसरी दफा ये बात बता रहा हूँ. We will not use constant of इंटीग्रेशन. रीजन क्या है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, कोई नई चीज नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ पहले डिस्कस हो चुका है. सो जस्ट यहाँ पर रिवीजन के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करना. u1 u2 u3 क्लियर हो गए. जब आ गए फिर यू कैन राइट योर yp is done, hence the general solution of the main differential equation. Here is the method. Practice third order differential equations. Here I have secant of 2x and x square. Here x plus 1 and 12x square minus 6x e power 2x. लिखा तो हुआ है it is an initial value problem, but let me find the initial conditions for it. I will explain these initial condition in online session. वैसे तो ये हमारे पास 4.7 एक्सरसाइज होगी for ZIL 7th edition. So you can also verify from there कि ये जो questions हैं इनकी initial conditions क्या हैं. So here is question number 20, 2y double prime plus y prime minus y plus x plus 1, and question number 22, y double prime minus 4y prime plus 4y 12x square minus 6x e power 2x. Initial conditions are y of 0 is equals to 1, y prime of 0 is equals to 0. The initial conditions for these two questions are y of 0 is equals to क्या था 1 and y prime of 0 is equals to 0. ये हमारे पास दो initial condition थी इन दोनों questions के लिए. Use these initial conditions, or for the sake of more explanation, if you want to go into the detail, आप इस exercise 4.6 को follow up कर सकते हैं.
इसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को भी देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25, 26 में गिवन है, इसी तरह से ऑनवर्ड क्वेश्चन में भी गिवन है। मजीद कोई प्रॉब्लम हुई तो वो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन सेशन में या फिर अपने ग्रुप्स में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।